Hello, in this lecture, we are going to study continuity and differentiability for JEE examination. And in the previous lectures, we've already covered continuity and a few questions we are going to discuss at first, and then let us see where this lecture goes. So I'll be waiting a few minutes for the students to join in, and then we shall start. Okay, so we have discussed till now continuity. Let us take it a little bit further. So I discussed with you something called as intermediate value theorem. Okay, I discussed with you something called as intermediate value theorem. And this is very important, or this is quite important as such. Please pay attention to this particular theorem. I'll repeat it for you. Just give me a minute. And importantly, this will be asked in an examination, and so I'm putting much focus on this. Okay. So as I told you that. So what did I tell you initially? That suppose f is a function, and it is a continuous function defined on a closed as well as bounded interval. Closed and bounded interval a comma b, and let d be any number between that. Let d be any number between fa and fb. Let d be any number between fa and fb. Then there will always exist some c belongs to a comma b such that fc is equal to d. And one of the important thing was that if your function is continuous, and if it changes sign from some point to some other point, let's say from negative to positive, there is one root guaranteed. At least one root is guaranteed. Is that clear? There is at least one root guaranteed. At least, again, remember, at least one root guaranteed. Okay. So for example, if your function is defined from a to b, and let's say at a your function is negative, at b your function is positive, then at least there would be some point, because as I told you, let d be any number between f and fb. So obviously, if your function is changing sign from negative to positive, there would be some point in between where your function would be zero also. And it is not necessarily that it will be a single point only. There may be more than one point, because see, it is not necessary that the continuous function behaves this way. If it behaves this way, then what? So there may exist at least one point where your function would be zero. So one or more than. Is that clear, Harshit? So Yes. this is an intermediate value. And this is very, very, very important, I'm saying. Okay. Let us do a few questions, and I'll make you understand that how important is that. Okay. So I'll do a few questions on this particular topic itself. And from tomorrow or probably a day after, we'll start with differentiability. Okay. So this is today's topic. So let us do a few questions on it. Let us say that let f be defined from closed interval 0, 1 to closed interval 0, 1 be continuous function. Be continuous function. Show that there exists some c belongs to open interval 0, 1 such that fc plus 2c की power 5 is equal to 3c की power 7. How to show that this particular thing? So just okay, just give me a minute. Okay, so this is how you are going to show. See, always remember in such questions to consider a function itself is a deal. So I'll take a function g of x which is equal to f of x plus 2x की power 5 plus 3x की power 7. Okay, minus. Okay, this is the function that I'm assuming. Okay, now I know that my f is a continuous function. 2x की power 5 is continuous, 3x की power 7 is continuous, because polynomial function is always a continuous function. Since f is continuous, x की power 5 is continuous,
and x की power 7 is also continuous. All these terms are continuous. What does it imply? It necessarily implies that your g as a function of x is also a continuous function. Is that clear? Now, since gx is a Yes. continuous function, so what I'll do, and I know that my function f for all x belongs to 0, 1 lies between where to where? Your f lies between 0 and 1. Because after all, the range of f must be either equal to codomain or it must be contained in the codomain. So in general, I can write that my function f would lie between 0 and 1. Okay. Now what I'll do, I'll try to find g0. What is g0? It is equal to f of 0 plus 2 into 0 minus 3 into 0, which is f of 0. Fine. What does it imply? It implies that your g of 0 will lie between 0 and 1. Okay, and this is closed. Sorry. Okay. So if g of 0 lies between 0 and 1, so again, as I told you on that day, if g0 equal to 0, if g0 equal to 0, then there is nothing to prove. Then there is nothing to prove. Why there is nothing to prove? Because if g0 equal to 0, that implies your f0 plus 2 into 0 की power 5 minus 3 into 0 की power 5 would be 0. Or in other words, I can write that my f0 plus 2 into 0 की power 5 is simply 3 into 0 की power 7, right? So here clearly c would be equal to 0. Is that clear? So you have found one c which belongs to closed interval 0, 1 only, such that f of c plus 2c की power 5 is equal to 3c की power 7. So if g0 is equal to 0, then there is nothing to prove. समझ में आई बात? Yes. And agar if g0 is not equal to 0, agar g0 is, if g0 is not equal to 0, then clearly g0 will lie between 0 and 1 only, excepting 0, because if g0 is 0, then there is nothing to prove, because if g0 is 0, that implies f0 plus 2c की power 5, 2 0 की power 5 minus 3 x की minus 3 0 की power 7 would be 0, or in other words, I can write that my c is equal to 0, satisfying this particular equation. But if g0 is not 0, then it implies that your g0 would lie between 0 and 1, or in other words, I can write that my g0 is positive or simply greater than 0. Now, my another assertion is, what would be g1? G1 would be f1 minus 1, because 2 into 1 is 1, minus 3, 2 minus 3 is minus 1, f of 1 minus 1. And again, the same thing if g1 is equal to if g1 is equal to 0, because see, f of 1 will lie between what? F of 1 will obviously lie between 0 and 1 only. And if this is the case, then if I subtract minus 1 from both of the side, I will write that my g1 would lie between 0 and minus, right? If we subtract minus 1 from both of the side. Now, if g1 is equal to 0, again, then there is nothing to prove. Why there is nothing to prove? Because if g1 is equal to 0, that implies what? It implies f of 1 plus 2 into c की power 5 minus 3 into 1 की power 7 would be equal to 0. Or in other words, I can write that f1 plus 2 1 की power 5 is equal to 3 1 की power 7. So c would be equal to 1 only here. So that is like nothing to prove, because हमें क्या बताना था कि क्या fc plus 2c की power 5 3c की power 7 हो सकता है? हाँ, हो सकता है, provided you take c equal to 1. But if c is not equal to 1, if g1 is not equal to 0, then it implies what? Then g1 would lie between 0 and minus 1. Agar if g1 is equal to 0, then there is nothing to prove, because then the statement that is being told to prove is true for c equal to 1. ये दिख गया? अगर g1 0 हो जाएगा बेटा, तो it implies f1 plus 2 1 की power 5 minus 3 1 की power 7 equal to 0, or f1 plus 2 1 की power 5 equal to 3 into 1 की power 7. So it is simply satisfying this particular equation with c equal to 1. Is that fine? So if g1 is not equal to 0, then what? Then g1 would lie between minus 1 and 0, or in other words, I can write that my g1 would be less than 0.
These are both the trivial cases which I'm not discussing because there is nothing to prove. If somebody says that yes, what do you mean? I mean that if C equal to 0, then this is true. If C equal to 1, then this is true, provided G1 equal to 0 and provided G0 equal to 0. So all like ये दोनों तो prove हो ही रहे हैं for C equal to 0 and for C equal to 0 and C equal to 1. If G0 is not equal to 0, then G0 would be lying between 0 and 1. That is G0 would be positive. And if G1 is not equal to 0, then G1 would be lying between -1 and 0, which implies G1 would be less than 0. Is that clear? It implies what? It implies there exists some C belongs to open interval 0, 1 such that क्या हो जाएगा? Such that GC would be 0 because the function G is changing its sign from positive to negative. So there would exist, खुद सोचो देखो, G1 कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. G0 कितना आ रहा है? Positive. G0 is coming as positive. G1 is coming as negative. So at least one C तो exist करेगा. There would exist at least one C such that GC is 0. And this C would lie between 0, 1 or C1 भी हो सकता है, C0 भी हो सकता है. That is possible when there are these two trivial cases. Okay? अगर ये है तो ठीक है, then there is nothing to prove. और अगर ऐसा नहीं, then GC would be 0, where C lies between 0 and 1, right? And if GC is equal to 0, that implies what? It implies FC plus 2C की power 5 minus 3C की power 7 would be 0. Or in other words, FC plus 2C की power 5 would be equal to what? 3C की power 7, where C lies between 0 and 1. Is that clear? ये पूछा जाता था. Is that clear or not? अब तुम बोलोगे यहाँ पे आपने ओपन इंटरवल बनाई है. हाँ, यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाई, लेकिन जनरल लिखोगे. जनरल मतलब अगर ये दोनों केसेस में इन्वॉल्व कर लोगे जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखे, जहाँ पे C0 और C1 है, then it implies that if f is a function from 0, 1 to 0, 1 and it is a continuous function, then there will always exist some C belongs to close interval 0, 1. Here I have included the cases. C0 भी होके satisfy कर सकता है इक्वेशन को, C1 होके भी satisfy कर सकता है, and C can lie between 0 and 1, then also it can satisfy. Then there exists C belongs to 0, 1 such that FC plus 2C की power 5 is equal to 3C की power 7. Is that clear? हाँ सर. आ गया ना समझ में ये वाला? हाँ सर. ओके, चलो गुड. एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब इस पे थोड़ा फोकस करना बिकॉज यहाँ पे गलतियां होती है यूजुअली बच्चों से. ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. शो दैट देयर एग्जिस्ट some C belongs to R such that C की power 179 plus 163 1 plus C square sin square C is equal to 119. Okay, I'll do it for you. So first, let us consider the function f of x as simply x की power 179. इसको देखते हुए plus 163 upon 1 plus x square plus sin square x minus 190. Now, if you try to find what would be f0, f0 would be simply, I think 163 minus 119, it would be, I think, 44. That is positive. Fine. And let's say if you want to find f minus 2, what would be f minus 2? It would be minus 2 की power 179 plus 163 divided by 5 plus sin square 2 minus 119. Now remember, this minus 2 raised to power 179 would be very large quantity as compared to this, because 163 divided by 5 plus what is sin square? Sin square always lies between 0 and 1 only. Whether it is sin square 2 or anything, it will always lie between 0 and 1. If it always lies between 0 and 1, this would be some quantity which would be like which would be obviously if you subtract it from. So if I want to write it here, I'll write it that sin square 2 would be lying between 0 and 1 only. 5 plus sin square 2 would always lie between 6 and 5 only. Or in other words, if I write 1 plus, this will 5 plus sin square 2 would always lie between
1 upon I should write what? It should always lie between 5 and 6 होगा ना हाँ. It will always lie between 1 upon 6 to 1 upon 5, and if I multiply 163 on both of the sides, so this is right. So it will lie between 32 and like 163 divided by 5 would be around 32, and it would be around I think some less than 32. Okay, so in any case it is somewhere 20 to 30. If I subtract it by 119, it would be negative. Overall this entire term would be negative, and there is a negative term here also, minus 2 ki power 179, this would be negative. So you can clearly see that your f minus 2 is negative. F2 is what? F0 is what? Positive. It implies what? It implies there would at least exist, there it implies there would at least exist some c belongs to minus 2 comma 0, such that fc is equal to what? 0. Or in other words, there exists some c belongs to r. Obviously minus 2 से 0 के बीच में तो real number में तो आएगी. So there exists at least one c belongs to r, such that fc is equal to 0. Or in other words, c की power 179 plus 163 plus 1 plus c square plus sine square c minus 119 equal to 0. Or in other words, you place it equal to 1. Is that clear? This is what we wanted to. Is that clear, Harshit? हाँ सर समझ गया. ये समझ में आ गया? Good. So ये मतलब थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा you will have to pay थोड़ा सा attention, है ना? हाँ सर. Okay. Now try to do this if you can do. Okay. Let f and g belongs to minus 1 comma 1 to r be a continuous function. Be continuous function. Be continuous functions such that fx का mod is always less than equal to 1 for all x belongs to minus 1 comma minus 1 comma 1. And given that g minus 1 is equal to minus 1 and g1 is equal to 1, show that there exists c belongs to closed interval minus 1 comma 1 such that this is show that, and this is such that, okay, such that fc is equal to g of c. So first thing again, most important thing in all these questions is to take the right appropriate function. F and g are both continuous functions. So I'll take a function h given from minus 1 comma 1 to r, which I define as h of x is simply equals to f of x minus g of x. Is that clear? Because we want to prove f of c is equal to g of c. So I'll take a function h of x equivalent to f of x minus g of x. And now if h of 1 is, it will be equals to what? It will be simply equals to f of 1 minus 1. Is that clear? And your fx lies between minus 1 to plus 1, because fx mod is equal to 1 implies what? It implies that your fx lies between minus 1 and plus 1 whenever x lies between minus 1 and plus 1. So f of 1, it implies, and I know that since f of 1 lies between minus 1 and 1, it implies what? F of 1 minus 1 would lie between minus 2 से लेकर 0. Is that clear? Is that clear, Harshit? हाँ सर. है ना? F of 1 lies between minus 1 and 1. दोनों साइड minus 1 घटा दो. Now again the same question. If f of 1 minus 1 is equal to 0, there is nothing to prove, because then f of 1 would be equals to 1. And this is what we wanted to prove, because f of 1 is equal to 1 means what? F of 1 would be equals to g of 1. So here c would be equals to 1. So if f of 1 is equal to 1, there is nothing to prove, because then f of 1 would obviously be equal to g of 1, because 1 is equal to what? G of 1. So I'll take the case where f of 1 is not equal to 1. So if f of 1 is not equal to 1,
then it implies that f of 1 will lie between -1 and 1, not including 1, and your f of 1 minus 1 would lie between -2 and 0. Is that clear यहाँ तक? ये केस तो सेम केस हो गया जो मैंने बताया था, नथिंग टू प्रूव वाला केस, हाँ है ना? क्योंकि ये तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर एफ ऑफ वन माइनस वन को जीरो ले लोगे तो एफ ऑफ वन ही वन के बराबर आ जाएगा, देन एफ ऑफ वन इक्वल टू वन, दैट इंप्लाइज एफ सी इज इक्वल टू जी ऑफ सी विद सी इज इक्वल टू वन। तो ये तो प्रूव ऐसे ही हो गया, मतलब बट सीधे रास्ते ही हो गया। बट अगर एफ ऑफ वन वन के बराबर नहीं है, इन दैट केस एफ ऑफ वन वुड लाई बिटवीन -1 and 1, and f of 1 minus 1 would lie between -2 and 0. That implies your h of 1 would be negative. And on the similar lines, similarly, if you find f of -1, f of -1 क्या होगा? It will be f -1 -1. Again, the same thing. Sorry, f -1 plus 1, I think, because you have taken the function to be f of x minus g of x ना. और अगर h -1 करोगे तो it will be f -1 minus g -1, and g -1 कितना? -1. So there would be a +1 here. So अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ पर, if f of -1 plus 1 के बारे में बात करूं, f of -1 क्या है? if it is equal to 0, देखो ना, f of -1 किसके बीच में आएगा बेटा? f of -1 would lie between, अगेन हमें ये तो पता ही है कि f of x हमेशा किसके बीच में लाया कर रहा है? -1 से 1 के बीच में। सो f of x अगर -1 से 1 के बीच में लाया करता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, 1 इंक्लूडिंग बोथ, देन ऑब्वियसली f of -1 भी किसके बीच में लाया करेगा? -1 से लेकर +1 के बीच में। And if I write that f of -1 plus 1 किसके बीच में lie करेगा? It will lie between 2 and 0. Again the same thing. If f of -1 plus 1 is equal to 0, that it implies f of -1 would be equals to -1. And I know that my -1 is nothing but it is equals to g of -1. So f of -1 would be equals to g of -1. So there nothing to prove, because this statement is quite obvious. With taken c equal to -1, you will be able to prove this assertion that we are trying to make. But if f of -1 is not equal to -1, or in other words, if f of -1 plus 1 is not equal to 0, then what does it imply? It implies that h of -1, which is equal to f of -1 plus 1, would be lying between 2 and greater than 0, or in other words, I can say that your h of -1 would be greater than 0. Is that clear, Harshit, यहाँ तक? हाँ सर। And from here, you know, because h it will be a continuous function, because difference of two continuous function is also a continuous function. So there would exist some c belongs to -1, 1 open interval such that h of c is equal to 0. And what was h of x? H of x was f of x minus g of x, if you see here. So what does it imply? It implies h of c equal to 0 means f of c is equal to g of c, where c lies between 0, -1 and 1. एंड इफ सी और अदर वाले केसेस देखें तो सी वन के लिए भी ट्रू हो सकता है और सी -1 के लिए भी ट्रू हो सकता है। सो इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ, देयर विल एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू -1, +1 क्लोज्ड इंटरवल सच दैट, इज दैट क्लियर? यस। पक्का ना, समझ में आ गई बात? देखो, हमेशा याद रखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर हम लोगों ने दिमाग लगाया है साइन चेंजिंग का। साइन चेंजिंग में ये होता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज कर रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो तो आएगा ही आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, या इट विल ऑलवेज नॉट बी नेसेसरी दैट यू आर आस्क्ड सच अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन, लेट एफ बी अ continuous function defined from closed interval a comma b to a comma b, ठीक है? does there exist does there exist some c belongs to a comma b such that fc is equal to f of a plus f of b divided by 2?
सोचो इस पे। सॉरी, ऐसा कर लेते हैं, गिवन दैट, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं ना, एफ ऑफ ए प्लस एफ। सो देखो, अभी तक देखो, मुझे एक बात समझाओ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए कॉमा बी टू ए कॉमा बी, it is very much clear that your f of a will always lie between a and b. Similarly, your f of b will always lie between a and b. Mantav, हाँ सर। it implies what? It implies f of a plus f of b divided by 2 will always lie between b and a only if you add both of them. So it will be some value in between only, right? It will be some mid value. So again, the same thing. If है ना, ये कोई ना कोई मिड वैल्यू ही होगी, मानते हो? या फिर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलेगा, इट इज फाइन। ठीक है, समझ पा रहे हो, इट विल बी सम मिड वैल्यू ओनली ना। देखो, हाँ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन टू किसके बीच में लाया कर रहा है? ए से लेकर बी के बीच में लाया कर रहा है। हाँ सर। अगर ए से लेकर बीच बी के बीच में लाया कर रहा है, तो कोई ना कोई वैल्यू सी तो आनी चाहिए ना, हाँ हाँ सर। है ना? जो कि देखो, ए से लेकर बी के बीच में लाया कर रहा है, मतलब अ, किसी ना किसी पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू, कोई ना कोई पॉइंट पे तो मिलना चाहिए ना, फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई टू के बराबर होनी चाहिए, because function takes all the values in between, right? So when it takes all the values from in between, so it will take for some c it will also take this value. अभी तक क्या कर रहे थे? जब भी फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज कर रहा था, तो बीच में जीरो टेन करेगा। जीरो कौन सी वैल्यू? इट इज अ वैल्यू विच इज इंटरमीडिएट टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एंड सिमिलरली नाउ, इंस्टेड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आई एम सेइंग अगर फंक्शन एफ ऑफ ए है और यहाँ पे फंक्शन एफ हाँ ऑफ सर। बी है, तो इसकी मिड वैल्यू कहीं ना कोई तो पॉइंट पर अटेंड करेगा ही ना फंक्शन। और वो मिड वैल्यू कहाँ से आएगी? कोई ना कोई पॉइंट सी पे 100% आएगी, जो कि ए कॉमा बी के बीच में लाया करता है। मैंने कोई क्वेश्चन ढंग से बनाया नहीं, नाउ आई विल मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। डिड यू गेट माय पॉइंट, व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट? हाँ सर। हाँ सर, समझ चलो, गया। एक काम करते हैं, तुम एक सिंपल से क्वेश्चन समझाते हैं चीज। सो नाउ ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ऐसे समझो, मतलब मैं व्हाट आई वांट टू से, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू एंड आई विल गेट अ राइट क्वेश्चन, ओके? सो मैं तुम थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा हूँ, देखो अगर तुम कर पाओ तो ठीक, नहीं कर पाओ तो मैं कराऊंगी। ये मतलब जो मैं बोल रहा था, इसका मोस्ट जनरल फॉर्म में क्वेश्चन है। सो लेट एफ बी डिफाइंड फ्रॉम a comma b to r be a continuous function, and let x1 x2 x3 dash 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 xn belongs to a comma b, and alpha 1 alpha 2 alpha 3 dash 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 alpha n be non-zero real numbers, be non-zero real numbers having the same sign, having the same, so that there exists some c belongs to a comma b such that
FC summation alpha I varying from 1 to n is equals to summation alpha I fxi. Don't worry about this question, I'll help you out. Don't worry. Just try to see एक बार इसको पढ़ लो ढंग से, so that I'll be able to explain you. Is that fine? Question समझ में आ गए? हाँ सर, एक सेकंड। Okay. So देखो, one thing is very much clear. एक काम करते हैं, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स है, सबके सेम साइन है, सबके सेम साइन है। तो एक काम करते हैं, जैसे कि मान लेते पॉजिटिव है ना, सबके सेम साइन है तो एक पॉजिटिव। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाई दैट अल्फा आईज वुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई लाइन बिटवीन 1 to 8. इज दैट क्लियर? और एक काम हाँ करते हैं, सर। लेट अल्फा बी इक्वल टू व्हाट, समेशन अल्फा। मान लेते हैं कि ये जो समेशन अल्फा ही लिख रहा है, ये अल्फा है। एंड फॉर श्योर इतनी गारंटी है कि अगर सारे पॉजिटिव है तो अल्फा भी पॉजिटिव होगा, राइट? हाँ सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इसको क्वेश्चन को पढ़ लेने एक बार ढंग से, मैं समझा रहा हूँ। सो इट्स वेरी मच क्लियर दैट इफ आई वांट टू राइट अल्फा आई upon alpha, obviously it will be positive, क्योंकि alpha i's are all positive, and alpha after all being the sum, it will be positive, isn't it? Now I know that my function f is given to be continuous. It is given to be a continuous function, right? So your function f is a continuous function. So function f is a continuous function. Okay, is that clear? हाँ सर। आराम से शांति से देखना, ठीक है। What does it imply? It implies that function will take all the values. Function will take all the values. Let us, one thing is very much clear, that function is defined on a closed and a bounded interval. And if function is defined on the closed and bounded interval, I told you on the very first day, the range will also be closed and bounded. अगर function continuous है और function closed और bounded interval पे defined है, तो function की range भी क्या आएगी? Continuous और bounded आएगी। Is that clear? हाँ सर। याद है या फिर मैं वापस बोलूं? देखो, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस defined on closed and bounded interval, defined on closed and bounded interval, then function also always attains maximum and minimum. That is, it will always be a bounded and a closed interval only. The range of f is closed and bounded. Is that clear? ये हाँ सर। याद है? मतलब कुछ भी चीज नहीं समझ में आए ऐसे तो बोल देना, ठीक है? ऐसा मत कहना कि हाँ हाँ करते जाओ फिर बाद में दिक्कत है, ठीक है? मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट जस्ट अगर नहीं याद हो तो प्लीज बोल दो, राइट? हाँ हाँ सर। पक्का ना? हाँ पक्का। सो इसका मतलब फंक्शन किसी ना किसी के बीच में होगा। लेट अस से दैट देयर एग्जिस्ट सम। देखो, ये तो बात जैसे मैंने समझाया भी था, जैसे कि देखो, अगर फंक्शन एफ एक्स है और मान लेते हैं -1 से मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, और अगर मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ क्लोज बाउंड इंटरवल -1, 1 पे, तो फंक्शन की रेंज क्या होगी? एक्स किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब एफ एक्स किसके बीच में आएगा? -1 से लेकर +1 के बीच में। और इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट एफ एक्स वुड लाई बिटवीन f1 और यहाँ पे आएगा f-। समझ में आई मेरी बात? अगर एफ एक्स एक्स के बराबर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम दोनों अटेन करेगा बेटा। समझ में आई? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों अटेन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ हाँ सर। पक्का ना? ये बात समझ में आ गई? हाँ अच्छा, गुड। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, हमें प्रूव क्या करना है। व्हाट वी वांटेड टू प्रूव दैट, शो दैट देयर एग्जिस्ट। अच्छा, मैंने लिखा ही नहीं था पूरा, तभी तो मैं दिक्कत आ रहा है। सच दैट एफ सी किसका रोल देगा? एफ सी इंटू समेशन अल्फा ए इज गिवन एज समेशन अल्फा इंटू एफ एक्स आई। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, देन देयर एग्जिस्ट सम जीटा, then there exists some zeta
belongs to a comma b such that f zeta is equal to 1 upon n fx1 plus fx2 plus fx3 dash 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 fx है। मैं समझाता हूँ क्या लिखो। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर f is continuous function and x1 x2 x3 xn belongs to a comma b alpha 1 alpha 2 alpha I are natural number having the same sign, are b non-zero numbers having the same sign, such that fc into summation alpha I is equal to summation I equal to 1 to n alpha I fxi, then there exists zeta belongs to a comma b such that f zeta is equal to this। अब चिंता मत करो, मैं करा रहा हूँ। तो ये चीज समझ में आ गई कि फंक्शन हमेशा मिनिमम मैक्सिमम अटेन करेगा ही करेगा, और ये जो हाँ मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। जैसे कि मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो एक बार को, एंड इफ यू टेक फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल -2 टू आर, तो इसकी रेंज क्या होगी बेटा, रेंज ऑफ एफ हो जाएगी मानते हो 0,4। हाँ सर। और ये कहाँ अटेन करेगा खुद सोचो, एफ एक्स कहाँ अटेन करेगा, 0 अटेन कर लेगा 0 पे, और 4 अटेन कर लेगा 2 पे। तो किसी हाँ ना सर। किसी पॉइंट पे तो अटेन करेगा ही ना। सो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि इन जनरल आई कैन राइट दैट एफ ऑफ एक्स विल अटेन मैक्सिमम at some point, let us say z, and fx will attain some minimum point, let us say at y, या इसको x1 x2 एक्चुअली रखें, इसलिए मैं इसको y और z कर। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट, a कॉमा b, या फिर अदर वर्ड्स में कह सकते हैं फंक्शन विल अटेन मैक्सिमम समवेयर एंड फंक्शन विल अटेन मिनिमम समवेयर। आई डोंट नो मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ अटेन होगा, कहीं ना कहीं तो अटेन होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ सर। And y would also belong to some a comma b only, and z will also belong to a comma b। और अगर ध्यान से देखोगे, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया और -1 से 1 लिया, तो मिनिमम मैक्सिमम कहाँ अटेन हो रहे हैं, -1 1 पे अटेन हो रहे हैं। और एफ एक्स हाँ इक्वल टू सर। एक्स स्क्वायर ले लिया और -1 से 1 -2 से 2 लिया, तो कहाँ अटेन हो रहा है, 0 पर 4 पे। पर 0 और 4 क्या दोनों इसके अंदर लाया नहीं कर रहे हैं, 0 और 2 के अंदर नहीं लाया कर रहे, 2 पे अटेन कर रहा है मैक्सिमम, 0 पे अटेन कर रहा है मिनिमम। क्या 0 और 2 इसके अंदर नहीं लाया कर रहे हैं? So fx will attain maximum and minimum somewhere, and let us say that this maximum will be attained at some y, and maximum will be attained at some z, and minimum will be attained at some y। Is that clear? Now multiply both side by alpha I divided by alpha। ये इधर भी मल्टीप्लाई किया, एक इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा आई अपॉन अल्फा एफ एक्स, और यहाँ पर भी क्या आएगा, अल्फा आई अपॉन अल्फा एफ जेड। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत हाँ बेटा सर। यहाँ तक? टेक अ सम ओवर बोथ साइड्स, दिस इज अल्फा आई अपॉन अल्फा एफ वाई will be summation alpha I upon alpha fx, and here also it will be alpha I upon alpha। अच्छा, अच्छा, ये यहां तक क्लियर? एक बार मैं समझाता हूँ, ठीक है, यहां तक क्लियर है, सॉरी। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, मानते हो? यहां तक क्लियर बेटा? fx will lie between fi and fz, it is true for all x, yes or no? हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ सर। देखो एफ एक्स इस बीच में लाई कर रहा है, एफ आई से एफ जेड के बीच में। इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। If it is true for all x, then it is true for all x1, x2, x3, xn, because they also lie between what, a comma b। मानते हो बेटा, they also lie between a comma b only। देखो यहाँ पे लिखा था हाँ x1, x2, x3, xn, they all lie between। उसके लिए भी ट्रू होगा, तो मैं इन जनरल xi लिख दूं, समझ जाओगे। So I'll write that हाँ this is true for all xi's also। Now take sum both sides, what you'll get, I think we'll have to fix another meet for this। Are you getting my point till now? हाँ सर। Okay, so I'll fix another meet and then we'll continue the discussion। हाँ सर। Okay.